Hi everyone. Hope your Olympiad preparation is going well. So today we are here with the new chapter, sorry, not new chapter, continuation actually of the chapter chemical effects of electric current. Here we will learn here in this chapter we will learn about the chemical effects, not the physical effects. This is a session 2 of the chapter. I hope so. This is the session two, right? This is the session two. Yes. So, so you have learned a something like introduction. You have not actually learned about chemical effects. You have not actually learned about chemical effects in the previous class. I'm talking about the previous class. You have just learned about what you know about conductivity, of what can you say? Let me see who have listened me carefully in the previous class. Conductivity of a liquid. So any liquid that has impurity or that have acid, base or salt dissolved in it or salt dissolved in it that can conduct. So little bit a quiz, let me say. Pure water, pure water is conductor and insulator, and tap water is conductor and insulator. Tell me. Now many of you have marked the right answer for pure water. That is insulator. You have marked the right answer. But for tap water, guys, for the tap water, you have done the mistake. You have marked what? Insulator. You have marked what? Insulator. And that is the wrong one. The correct one is the conductor. So you must have thought that tap water to normal pani hota hai, right? It does not contain. But you remember that most of all mineral water, have you learned hard this term mineral water? So what is at there? Mineral at there, or some salts are at there. Okay. So tap water is also not actually pure. You taste it, you will get a taste. You taste it, you will get a taste. But if you taste a ice cube, like when you take tap water and make it solid form, it crystal form actually it becomes, that is the ice cube form. Now ice cube form is the purest form. So that time when you taste, you will be seeing that it will be not tasting, no taste. But normal tap water, if you taste, it will be tasting like salty or sweet, like this. Not so sweet, but some other taste will be there. So this shows that something is dissolved, because taste तो प्योर वाटर में नहीं होगा. प्योर चीज में तो टेस्ट चीज ही नहीं होता. तो that's why tap water is a conductor, remember. और बाकी तो आपको पता है कि लेमन, that lemon is all lemon juice is a conductor because acid में है. Caustic soda is a conductor, base है. So this you all know, right? Now see, is there any conductor of electricity present in this list?
सी ग्लास प्लास्टिक वुड तो सीधा सीधी ना हो जाएगा। वूल फेब्रिक कॉर्क, कॉर्क भी सीधा सीधी ना हो जाएगा। पेपर भी क्या होगा? रबर सेरामिक। टेल मी। चार ऑप्शन में आपके लिए काट दिया हूँ। हाँ, इज देयर आंसर बोलिए, ये और नो। रबर नहीं होगा आप बोल रहे हो, ओके। पेपर भी नहीं होगा, फैब्रिक भी नहीं, वो भी नहीं, ceramic भी नहीं। सो आंसर विल बी नो। क्या होगा आंसर? द आंसर विल बी नो। Now let's learn what we will be learning. Today we will be learning the chemical effects. The chemical effects, let me explain first, then I will be explaining through slide. The chemical effect, that only one chemical effect is we will be learning in this class, and its various type of application we are going to learn. Like application means what are its uses, how it is used, right? That we are going to learn. But the main chemical effect that we are going to learn, the process is called as electrolysis. Why it is called electrolysis, I am telling in a bit. ना इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एक वाटर होता है, सॉरी वाटर नहीं, कोई सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर दो रॉड होता है, सिंपल थिंक लाइक दिस। एक सॉल्यूशन है, ओके। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन शुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द सॉल्यूशन शुड कंडक्ट, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दे रहा हूँ, उसके बाद स्लाइड से धीरे 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 सब आपको समझाऊंगा। लाइक इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, it should be a substance that conduct electricity. That substance name is known as the, that liquid, that liquid that can conduct electricity is known as the electrolyte. It is known as the electrolyte. और इस प्रोसेस को किए बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो ये समझ में आया, ये समझ में आया कि यहाँ पर एक ऐसा कंटेनर है, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट मस्ट बी, that must have impurity, or that must contain a solution of acid, base or salt। और इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या? प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। Lysis means breakdown. Okay, lysis means breakdown. Electro means electricity. We are using breakdown. We are using electricity to break down the particles in small parts. Okay, that is called the electrolysis. एक बात बता दूं इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने से पहले कि NaCl ये कैसे जुड़ा है। आप इसका कहानी आप बहुत पहले से ही जानते हो, हाउ इट हैज कम टुगेदर एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट प्लस माइनस। So always remember that anything having positive charge attract a negative charge. And in our symbolic form, if we write NaCl, so in this compound name, the first element, that is sodium, is being positive and chlorine is being negative all the time. If you write H2O, this first one is the positive one, this second one is a negative. That's why this positive and negative has joined together. That's why this positive and negative has joined together. All will remember this, that any atom, like if you write CuSO4, copper sulfate, you have learned these elements. Copper sulfate, this sulfate is negative, this copper is positive. That's why they are linked together. Can you understand this part? Hmm? That जो भी
एक मॉलिक्यूल होगा, एनी मॉलिक्यूल इट मे बी, it will be having one positive ion and one negative ion. नाउ आप पूछोगे कि आयोन क्या होता है? आयोन मीन्स चार्ज पार्टिकल, आयोन मीन्स चार्ज पार्टिकल। ये एच पॉजिटिवली चार्ज है, दो एच मिलकर पॉजिटिवली चार्ज बनाया है। क्या बनाया है? पॉजिटिवली चार्ज बनाया है। मतलब ये नॉर्मल एच ये चार्ज नहीं है, पर जब ये H2 हो जा रहा है तो यह ऑक्सीजन के साथ आकर ये चार्ज गेन कर रहा है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं बता दूंगा। तो और ये भी एक आयन है और ये भी एक आयन है। जो पॉजिटिव होता है उसको बोला जाता है कैटायन। क्या बोला जाता है? कैटायन। और जो नेगेटिव उसको बोला जाता है एनायन। पॉजिटिव को बोला जाता है कैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज गेन किया है उसे बोला जाता है कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज गेन किया है उसे बोला जाता है एनायन। नाउ लेट्स कम अगेन टू आवर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो एक बात बोलो, एक पहले एक बात बोलते उसके बाद हम लोग जाएंगे। ओके, नाउ टेल मी दैट इन दिस केस, first tell identify the component name guys, this component name CaCO3, calcium carbonate, very good. Now this one is what? One molecule, can you understand this? And this one is one element, can you understand? So this calcium is together linked, and this one, this and this are together linked. This is positive, this is negative. You can easily understand. Like अगर एक बड़ा कुछ लिख दिया like सिल्वर नाइट्रेट, ओके, सो सिल्वर एक मेटल है तो ये पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है, यही सिंपल फॉर्मूला है। जिंक, ओके, आयरन, आयरन ऑक्साइड, दिस इज पॉजिटिव, आयरन ऑक्साइड नेगेटिव, दिस इज अंडरस्टूड। पहले जो होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड सेकेंड में जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज पॉजिटिव इज अट्रैक्टिंग द नेगेटिव वन, द पॉजिटिव विल अट्रैक्ट बिकॉज पॉजिटिव हैज मोर पावर। अंडरस्टूड? इलेक्ट्रोलाइसिस में आते हैं जो कि हमारा केमिकल इफेक्ट है। जब कोई सॉल्यूशन ऐसा होगा, हम लोग जब एक सॉल्यूशन है, when we will be taking a solution, now this liquid can conduct electricity, this liquid that is there inside this container can conduct the electricity. So this is the electrolyte, बार बार बोल रही है, भूल मत जाना, ये ड्राइंग में इंपॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और हम लोग यहाँ पर लेंगे NaCl, दैट इज इन द मोल्टेन फॉर्म। क्या लेंगे गाइस? NaCl। नाउ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू हैपन टू कंडीशंस आर नेसेसरी। फर्स्ट कंडीशन इज मोल्टेन फॉर्म, और it should be diluted or dissolved in water। लाइक अगर सॉल्ट हमारा वाटर में डिजोल्व है तो भी काम चल सकता है, अगर सॉल्ट को हम लोग मेल्ट करके डालेंगे तो भी काम चल सकता है। पर अगर सॉल्ट को हम लोग मेल्ट करके डालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, पर डिजोल्व करके डालेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। यू रिमेम्बर दिस पार्ट कि एक अगर हम लोग मोल्टेन फॉर्म में डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस दूसरा होगा, और डिजोल्व फॉर्म में डालेंगे, वाटर वाटर के साथ डिजोल्व कर देंगे तो दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। कौन दो? मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, NaCl को ले रहा हूँ ना। हम जानते हैं कि पॉजिटिव को कहते हैं कैटायन एंड नेगेटिव को कहते हैं एनायन, ये जानते हैं। और एक थिंग लिख लेते हैं यहाँ पर कि NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है।
ये जानते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर हम लोग दो रॉड that can also conduct electricity that we are passing, so that electricity will pass through this. Understand? There is no wire, guys. They are just, there are two rods. These are known as the electrode. What is known? Electrode. These two rods are just put in the water. Wait, let me see if this thing here. Now, these two rods are just submerged in the water, and this will be like joined with the battery. This will be joined in the battery. So electricity is passing. So here is no connection, but the water is still there, and that can conduct electricity also. So electricity will be passed, and circuit will be complete. That means electricity will be passing through this circuit. ना इफेक्ट क्या है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर गया ये हम लोग समझ में आए। ये दो रॉड भी ऐसा होना चाहिए, दो रॉड जो इलेक्ट्रोड बता रहे हैं हम लोग, दे शुड भी ऐसा होना चाहिए कि वो भी conduct करे इलेक्ट्रिसिटी को। It should be also conductible. Now when we are putting these two rods here, if it is passing, the NaCl, that is a compound, ये आयन नहीं है, इसमें आयन नहीं है, मतलब चार्ज नहीं है। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यहाँ पर चार्ज का डेवलप्ड हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। मतलब पहले ही NaCl था नॉर्मल, पर जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास किए, वे एक आयन में बदल गया, मतलब वे चार्ज हो गया। अब ये जो राइट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव वन is connected with the positive side, that is known as the anode. तो आप जानते हो कि एनियन मतलब नेगेटिव होता है, तो ऑपोजिट साइड में कनेक्शन होता है, आप ये भी जानते हो। इसलिए एनोड का कनेक्शन क्या होगा गाइस, एनोड का कनेक्शन होगा नेगेटिव, एंड कैथोड का कनेक्शन होगा पॉजिटिव, जो भी साइड में हो। ये इस साइड में भी हो सकती है, इस साइड में भी हो सकता है, पर रिमेंबर दे आर टू टर्मिनल्स, इट बिकेम, जब बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है, तो एक्चुअली नाउ दिस टू बिकेम द टर्मिनल्स, दिस टू बिकेम अ वे लाइन, दिस टू बिकेम अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्या करेगा, जो NaCl ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, this much also not, okay. So now this Na will rush towards the negative, because this is a positive, तो positive will rush towards negative। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम गैस दिखाई देगी, सोडियम गैस दिखाई देगी, या फिर सोडियम डिपोजिट भी हो सकता है, सोडियम डिपोजिट भी हो सकता है। And this chlorine will move towards anode and will be escaping as chlorine gas, ये आप समझे, राइट। अगर इसे डिजॉल्व फॉर्म में किया जाए, वाटर में डिजॉल्व, वाटर में अगर डिजॉल्व हो, तो ये H2O का करेगा, H, बिकॉज वाटर है ना, वाटर का ही करेगा ये। दैट टाइम व्हाट विल हैपन, A, this is the positive and this is the negative, sorry, this is the negative and this is the positive. So in that case, hydrogen will run towards that side and oxygen will run towards this side, and here more bubbles, one in one side it will be evolved, there oxygen is being evolved, and where less gases are evolved, that is hydrogen. Like this electrolysis is done. So electrolysis is actually a decomposition of the substance, तो हमने पहले पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द chemical effect. Now, what will happen with when electric current is passed through a liquid solution, that we already know, right? What will happen?
they will be decomposing, right? The metal will be decomposing into breaking down to sim plus m. That is the name actually process. Now we have taken two carbon rods from the two discharge cell. सेल के अंदर भी कार्बन रॉड रहता है. वो कार्बन रॉड हम लोग निकाल कर उनका मेटल कैप क्लीन कर उन दोनों रॉड को बाहर लेके आए. We have taken out those two rod, and these two rod are basically called the electrode. These two rods are basically called the electrode. Now we have put water in a plastic cup. Why plastic? Because the electrons would not go outside in the environment, because electrons can travel anywhere, right? Add a teaspoon of salt or a few drops of lemon juice to water, make it. यहाँ पर क्या वाटर, तो हम जानते हैं कंडक्टिंग है, पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडक्टर बनाना है ना. सो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है बनाना है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करना है घर में. सॉल्ट या फिर लेमन का जूस. क्यों सॉल्ट दे रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिड बेसिस या सॉल्ट ही होना चाहिए. तो लेमन जूस एसिड का काम, या सॉल्ट सॉल्ट का काम करेगा. As well. Now immerse the electrodes. That means the two carbon rods we are immersing. See, and we are connecting with the battery. Okay, in the water, in the water, in the water. This is a real life. This is the diagram. Now, when we will be seeing, or we will observe carefully, we will observe carefully that what you will be seeing. What you will be seeing bubbles. Yes or no? Yes, because electricity is flowing, right? It contains a lot of ions. Now it becomes a charged object. It is now containing the ions. So so what is happening? We will be seeing bubbles. Why bubbles will be seen? Why bubble will be seen? Because at one side oxygen is connected and other side hydrogen is being connected. Why? Oxygen bubbles are connected to the electrode, connected to the positive terminal, because I we know that oxygen is negative, so it will be going to positive terminal. Positive terminal is known as what? Positive terminal is known as what? Anode. Hydrogen bubbles are collected to the electrode that are negative, because hydrogen is positive, so it will go in the negative. Can you understand? ना यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, ये जो H2O है, ये ब्रेक डाउन कर गया, ये ब्रेक डाउन कर गया H2 प्लस O2. H2 plus O2. These type of reaction are also known as the electrolytic decomposition reaction. This you will learn in more detail in class 10. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अलग कर रहे हैं. डिकम्पोजिशन मतलब अलग करना. वी आर डिकम्पोजिंग द सब्सटेंस. ओके, सो दैट बबल्स आर विल बी कनेक्टेड. So now let's see, just like water, whether some food and variable also conduct electricity. Now, if you cut the potatoes into half, and we will be inserting the copper where, what you will be seeing? Let's see for half an hour. Let's keep on half an hour. It actually does the current flows. Does the current flows? Yes, does the current flows? Yes or no? Hmm? Numerous for the reach in इलेक्ट्रोलाइट्स. आप जानते हैं कि लेमन में एसिड होता है, वैसे ही विटामिन सी होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, दैट आर एक्टिंग एज द इम्प्योरिटीज, और दे आर आल्सो जूसी. तो ये जूसीनेस प्लस देयर इम्प्योरिटी मेक देम अ गुड कंडक्टर.
make them a good conductor. So yes, it will be flowing. So now if you connect, you will be seeing a blue spot. You will be seeing in the potato. You will be seeing a blue color spot, and you will be seeing deflection in the magnet. Understand? Now the activity can be used for anywhere in the positive terminal of a cell or battery or concealer box. Now find a mistake. Okay, let's find a mistake first. Then we will go. That oxygen bubbles are collected on the electrode connected to the negative terminal of battery. No, today we will not learn about electroplating. We will only learn up to electrolysis today. Okay. Oxygen bubbles are collected on the electrode connected to a negative. Oxygen क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव कहाँ होगा? क्या होगा ये? पॉजिटिव टर्मिनल होगा. राइट. So doubt time. Do you have any doubt? Okay, let's see the questions. Most commonly asked doubt questions. Is electrolysis a physical change? क्यों चैप्टर का नाम ही पूछ रहे हो? केमिकल इफेक्ट है, केमिकल रिएक्शन शो कर दिया, तो ये क्या होने वाला है? केमिकल चेंज होने वाला है. रिएक्शन तो शो कर दिया आपको, नहीं किया? H2O, H2 प्लस O2, NaCl का रिएक्शन शो कर दीजिए. ऑब्वियसली गाइस, Na प्लस Cl2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर सॉरी सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा. 2 NaCl आएगा, 2Na प्लस Cl2 गैस. सो यही हमारा डिकम्पोजिशन. ये तो केमिकल रिएक्शन ही, केमिकल सॉरी केमिकल इक्वेशन ही तो लिखा. केमिकल इक्वेशन मतलब तो केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल चेंज थोड़ी है. और चैप्टर का नाम ही बोल रही है केमिकल इफेक्ट्स है, मतलब केमिकल. फर्स्ट दिन ही मैं बता दिया था ये. ऑक्सीजन गेट अट्रैक्टेड विद विच सेमिनर गाइस? Oxygen is negative charge always, so it will be attracted to anode that is the positively charged. Why this water does not contain? Because it does not contain impurity. It does not contain any impurity or solution of acid, bases, or salts. Let's go to the quiz. Last quiz of today. What is the splitting of a compound? Splitting of a compound using electricity called electrolysis. Very good. When current is, this is your homework. When current is passed through water, hydrogen is deposited at the electrode connected to the which terminal? Hydrogen. Hydrogen is a positive, so it will be going to yes. When electric current is passed through potato, potato का question था. Potato. A spot is formed around the where of dash terminal. किस टर्मिनल के और किस कलर का? Its spot will be greenish blue. Greenish blue and positive. Why you know? In the positive side it will be there. Why on the negative side? तो यहाँ पर हमला we are drawing a potato here. Let me draw a potato. Potato slice. Now here two wires are connected like this. To battery. Now let's connect it to a bulb. The bulb will grow obviously. Now it's the positive. This is the negative. Means this is the positive. This is the negative. This is the positive. Now here we will be seeing a bluish green spot, because you know that from here it will be passing. So first the point where it is tracking continuously, that point will become blue, and then it is easily flowing and going. Again it is coming and tracking. So this first point wherever any fruit it will be, this point is known as the focus point. Here the color change will be occurred. Tell.
which of the application of electric current? This is not told to you. अब आप सेल में इलेक्ट्रोड होता है, देखा, मतलब सेल भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से चलता है. You knew that? Chemical effect is indicated in change of color. चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है, कोई इवोल्यूशन भी हो सकता है. दैट यू हैव लर्न राइट. केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. वी कैन अंडरस्टैंड बाय द एनी प्रेसिपिटेट, टेम्परेचर चेंज और एनी इवोल्यूशन or color change, that you can understand, right, when there is a chemical change. Some or the other condition will be satisfied here. So guys, that was all. That was all actually. Electroplating chapter I will be not starting now. It is a vast topic. We will continue this next in the session 3 after, like, in December I will be start, because your syllabus is already completed. If you tell, again I am telling, if you tell when his request is come, will come, is not coming till now, come, then I will be doing conservation of plants and animals for sure. So till then, take care and bye bye. Okay, meet you in the next class. Peace off.